Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 84 for that topic, sexual reproduction in flowering plants. We have been learning the adaptations for pollination by animals, by biotic agents. We have just seen the adaptations for entomophily in the last few lectures. Okay, now please refer that because they are all articles what we have discussed there. They are all points are very important. Now here we are going to learn another agent. What is that? Bird. So adaptations for ornithophili. You know that ornis means bird. Ornis word का मतलब bird ऐसा आता है. And that's why ornithophili means that bird pollination. When pollination is carried out by the birds. When carried out by insect, entomophily. When carried out by the birds, it is called as ornithophily. Ornis means bird or bird pollination. And such plants are called as ornithophilous plants. ऐसे plants जो है उनको ornithophilous plants भी कहते हैं. So ornithophilous means bird loving. So they will like that birds should come there and birds should visit there and carry out their pollination. That's why they are called ornithophilous. Isn't it? Ornithophilous plants particularly. Then another important thing is that some of the common pollinating birds, not all type of the birds are showing pollination there, helping the plant for pollination, but some are definitely carrying out the bird pollination. Which are that? That particularly hummingbirds, sunbirds, crow and the bulbul. ये चार examples बिल्कुल ध्यान में रखो. Hummingbirds and sunbirds are very common. Small birds होते हैं. They visit the flowers and then they carry out the pollination. Okay. Then another is that crow and that bulbul. Okay. So they all can carry out the pollination in some of the plants there. Okay. Then which plants can undergo bird pollination? ये भी पूछा जाता है. That examples of ornithophilous plants. तो ये चार एग्जाम्पल तो बिल्कुल ध्यान में रखो. चारों भी बी से है. बी यानी क्या? बॉटल ब्रश. कॉमन नेम है बॉटल ब्रश. उसका नाम है कैलिस्टेमॉन. कैलिस्टेमॉन. Isn't it? कैलिस्टेमॉन नाम का जो है प्लांट, that is called as the bottle brush. Then another is the bignonia. Another plant is there, bignonia. Callistemon, bignonia, butea and bombax. उसमें से जो bombax है उसे silk cotton tree कहते हैं. So they are common examples. So select the correct set of ornithophilous plant. ऐसा अगर ABCD में आया है, definitely you have to select correct. 3 या 4 दिए होंगे, हमको मालूम होना चाहिए. That bignonia, bombax, butea, bottle brush या कैलिस्टेमॉन. They are all the examples of ornithophilous plants. अब adaptations क्या होते हैं देखेंगे हम. Special features क्या दिखाते हैं. Particularly we can say that these flowers are very large. Flowers should be very large. And they should be having thick and fleshy floral parts. उसके floral parts भी thick और fleshy ऐसे होते हैं. ये बिल्कुल देखने के बाद ही हमको ध्यान में आ जाता है. डेलिकेसी थोड़ी कम रहती है. यानी floral parts are not that much delicate. और वो होना भी चाहिए, thick होना चाहिए floral part, यानी petal etc. So that bird can at least sit there. नहीं तो वो बर्ड वहां पे लैंडिंग भी नहीं कर सकेगा. Isn't it? स्मॉल बर्ड होना तो जरूरी है, लेकिन तो भी. Isn't it? So particularly it should have thick and fleshy floral parts. ये एक पॉइंट उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Then particularly no fragrance. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. No fragrance to the flower. Why? अब देखो नेचर का कमाल देखो आप. पर्टिकुलरली why the flowers are not scented here. Bird pollinated plants
are not producing scented flowers. Why? एक मार्क के लिए आया तो because they are not going to waste their energy, because birds have poor sense of smell. Poor sense of smell. उनको सेंस ऑफ स्मेल ही बहुत कम होता है और इसलिए वो सेंस कम होने की वजह से उनका इंटरेस्ट वो फ्रैग्रेंस में नहीं है, उनको पर्टिकुलरली स्मेल में इंटरेस्ट ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई फ्लावर को मालूम हो गया. अब ये देखो नेचर में कैसा समझदारी कैसा होगा ये. हाउ द प्लांट वुड हैव अंडरस्टैंड दैट आवर पॉलिनेटिंग एजेंट इज बर्ड and bird do not like the fragrance or have nothing to do with the fragrance. If bird has nothing to do with the fragrance, why should we waste our energy? उतना ही खर्चा बच गया. देखो स्प्रे मारने की जरूरत भी नहीं उसको. Isn't it? So this is really wonderful, amazing feature of the nature. मैं तो बिल्कुल सरप्राइज मुझे लगता है इसका. Isn't it? Then another important thing is that flowers are colored, specific colored. उसको स्पेसिफिक कलर अच्छा होना चाहिए फ्लावर को. स्पेसिफिक कलर जैसा ऑरेंज, रेड, ब्लू, because these colors are liked by the birds particularly, isn't it? They are having that particular color. ऑरेंज है, रेड है, ब्लू है, येलो है. That they are liked by birds. अगर ये कलर है तो बर्ड्स बिल्कुल वहां पे अट्रैक्ट हो जाते. अगर पर्पल कलर है या और कोई कलर है, ग्रीन कलर, दूसरे अगर कलर है तो देन दैट मे नॉट गेट अट्रैक्ट. इसी कलर को अट्रैक्ट हो जाता है. ओके, ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो, दे आर लाइक बाय द बर्ड्स एंड दैट्स व्हाई flowers are having that much. Then second thing is that flowers produce large amount of nectar. Large amount of nectar. Because that is used as drink by the bird. Used as a drink by bird. जो बर्ड है वो उसे ड्रिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर देयर. ओके, देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट pollen grains should be there sticky. Pollens should be sticky so that they will get attached or adhered to the beak or to the body part of that insect, that bird, and bird may carry it out. तो देखो ये पूरे पॉइंट्स ऑर्निथोफिली के बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जस्ट सी हियर, एक तो हमें क्या लर्न करना है. ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय द बर्ड, बिकॉज ऑर्निक्स का मतलब बर्ड है. द प्लांट्स हु गेट पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स आर कॉल्ड ornithophilous plants, bird loving plants. तो एक तो कौन से बर्ड जो है, which bird are carrying out pollination? करेक्ट आंसर आएगा हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, क्रो एंड बुलबुल, बाकी नहीं. देन अनदर एग्जांपल ऑफ ornithophilous प्लांट, तो उसमें कैलिस्टेमॉन नाम का जो प्लांट है, बॉटल ब्रश कहते हैं उसे, कैलिस्टेमॉन. Then that bignonia, then that butea and bombax or BBB, silk cotton tree कहते हैं bombax. So they are pollinated by that few plants as compared to the what to say that particularly insect pollination. Very few plants are showing bird pollination. And what are the specific characters shown there? One of the specific characters is that flowers are very large, thick and fleshy. Floral parts should be there, so they can tolerate that particular bird there.
Then another important thing is that no fragrance to the flowers. Flowers are without any scent. They are not having a scented nature. Why? Because birds have poor sense of smell. Then another is that flowers are specific colored. Orange, red, blue and that yellow. They are liked by birds, and that's why birds get attracted very easily if the flowers will be orange, red, blue or yellow color. And then flowers produce large amount of nectar used as a drink by the bird. Okay, वो bird जो तो एक तो ज्यादा पानी पीते नहीं, हमको मालूम है, isn't it? तो bird जो है, they are drinking that nectar from that particular flowers. And pollens should be sticky. Pollens sticky होना चाहिए. Okay. So this is all that very important part of that. What do you say that? Ornithophili. Ornithophili के ये points बहुत ही important माने जाते हैं. So another adaptation we shall learn, that is called as the adaptations for chiropterophily. Now chiropteron means bat. So this is nothing but the bat pollination, I will say. Okay. This is bat pollination. Chiropterophily. That is bat pollination. Very simple. समझ में आ रहा है? Then another thing is that flowers are very large. इसमें adaptations जो दिखाते हैं. Bat should come there and bat should carry out the pollination. What good, isn't it? So that particularly bat जो है वो कैसा आता है, pollination कैसे करता है देखेंगे हम. For that purpose the adaptations are like that. Flowers are very large and they are stout enough to hold the bat. Bat वहां पे जाने, helicopter is going. So specific adaptations are there. The flowers should be very large and they should be stout enough to hold that bat. Isn't it? Second thing is that this is really admirable character. Flowers are nocturnal. What do you mean nocturnal? You know that bat is a nocturnal animal. Nocturnal means which is active during night period and takes rest during the, what is that, day period. Nocturnal और diurnal कहते हैं. अब हमारी जो बेसिक हमारी जो बॉडी का फीचर बना है पर्टिकुलरली नेचर ने, that we should remain active during the light period, sunlight period, day period, and during the night period should take the rest. ये नॉर्मल है, लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं अडेप्टेशन करना पड़ता है. Those persons who are working throughout the night shift there, so many big population is there, isn't it? और आजकल नेट की वजह से आप लोग भी बहुत नॉक्चर्नल बन गए हो, यानी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट पीरियड. कितना टाइम चला जाता है मालूम नहीं. तो ऐसा मत करो. एक्चुअली हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, दैट बॉडी मेटाबॉलिज्म इज मींट फॉर दैट डे पीरियड. और नाइट में एक टिपिकल रेस्ट पीरियड हमारा होना चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम 11 to 3 इन द मॉर्निंग. मिडनाइट जो है वो 11 PM से 3 AM तक का जो पीरियड है, 4 hours. ड्यूरिंग दैट पीरियड लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इन आवर लीवर. तो इसलिए उसे पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन शरीर का वहां पे चाहिए रहता है. और उसमें का अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट आप कम करते जाएंगे, देन डेफिनेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल नॉट गेट कंप्लीटेड. समझो, मान लो 11 से 3 अगर आप नींद अच्छे नहीं ले रहे हैं, नींद में नहीं है, समझो 2 बजे आपने नींद चालू कर दिया, यानी आपके 3 आवर्स जो है 11 to 2 वो तो चले गए, isn't it? 1 ही घंटा बच गया मेटाबॉलिज्म के लिए.
So the next day you will not feel fresh. तो ये करके देखो एक बार. टेक वेरी साउंड स्लीप. राइट, मैं तो कहता हूँ 10:30 से जाओ बिल्कुल बेड को, ज़्यादा से ज़्यादा 11, और मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे आराम से. 5 बजे उठता हूँ मैं. आई यूज टू गो टू बेड एट 11 एंड एवरी डे आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग. तो ऐसा करके देखो, बहुत फ्रेश लगता है दिन भर. तो चलो ये देखो नेचर का कमाल. बैट इज नॉक्चुरनल. It is active during night period. That's why here the flowers are also nocturnal and they remain active during night period. कितना इंपॉर्टेंट देखो, वो नाइट पीरियड में ही ओपन होते हैं, दिन में नहीं. So that bat will come there for pollination. Okay. Another very important feature is there that flowers of such plant emit rotten fruit-like fermenting odor. Rotten means decayed. जो decayed fruits है, decayed oranges या particularly decayed grapes वगैरह, वो देखो रख के देखो, या पर्टिकुलरली हमारा चीकू जो होता है decayed, एक स्मेल उसका लेके देखो आप, rotten स्मेल कहते हैं उसे. फर्मेंटेड, उसमें फर्मेंटेशन चालू हो जाता है, बैक्टीरिया का एक्शन, वो हमारे खाने के लायक नहीं रहते, फिर बाद में उसका फर्मेंटेशन हो जाता है. सो दैट गिव्स वेरी बैड स्मेल देयर. दैट इज रॉटन स्मेल. किसी को वो भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा अल्कोहल का स्मेल आता है. आफ्टर फर्मेंटेशन द प्रोडक्ट इज अल्कोहल, इजंट इट? तो ये फर्मेंटिंग ओडर जो है दैट इज लाइक्ड बाय बैट्स. तो इसलिए ये फ्लावर्स भी वही स्मेल तैयार करते हैं. अमेजिंग फीचर रियली. ये कैसा उनको समझ में आता होगा, गॉड नोस. देन अनदर थिंग इज दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस कोपियस मीन्स abundant. कोपियस का मतलब क्या है? इन लार्ज अमाउंट. नेक्टर इन वेरी लार्ज अमाउंट सो दैट बैट्स विल यूज दैट एज देयर फूड. बैट आएंगे फ्लावर को तो उनको रिवॉर्ड चाहिए ना कुछ, so that will be given there. Okay. Then abundant pollen grains are also produced. Pollen grain खाओ, नेक्टर खाओ, और हमारे पोलन्स कुछ लेके जाओ. पूरे पोलन से वो खाते नहीं, थोड़े खाते हैं, बाकी के ले जाते हैं. And these are that particular adaptations there. Examples of this plant, bat pollinated plant, are very important there. एक तो डेंस फॉरेस्ट में के प्लांट्स है ये. These plants are from the dense forest, particularly Anthocephalus, Kigelia pinnata, Adansonia and Baunia. Okay. एक प्लांट मैंने क्या बताया, उसे डेंस फॉरेस्ट में कदम्ब ट्री ऐसा कहते हैं. कदम नहीं, कदम्ब. बहुत बड़ा ट्री रहता है. That is particularly Anthocephalus. Then Kigelia pinnata, ये भी बहुत बड़ा ट्री है डेंस फॉरेस्ट में. Then Adansonia, that is called baobab tree. baobab tree जो है वो भी एक बड़ा डेंस फॉरेस्ट में है. And Baunia. So these are the examples of Chiropterophilous plants. So these are all about that adaptations shown by the plants for biotic agents. We have seen adaptations shown by the plants for water pollination, abiotic. Adaptations shown by plant for wind pollination, abiotic. Then adaptations shown by the plants for insect pollination. Adaptations entomophily shown by the plant for bird pollination. And the fifth, which we have completed just now, adaptations shown by the plant for, what do you say that, bat pollination. So I am sure you have understood all these points very properly, very correctly. They will help you in both kind of the examinations, board examination as well as NEET MCQs. So do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my XIIth Biology channel as well as XIIth Chemistry channel. Thanks a lot.